Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. So we have completed Good exercise afternoon, sir. 17.1. Good afternoon. We have to start with exercise 17.2 today. Open your books. Open exercise 17.2, everyone. Sir, excuse me, sir. Yes. Sir, I am asking the definition of angle. What is the definition of angle? बेटा अभी जब एंगल पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा. Not now. Excuse me, sir. Sir, for making an angle, we have to use a special tool. Yes. बताओ बेटा. Sir, this tool. The semicircle, sir. The triangle, the circle, sir. Semicircle. Sir, this. This is known as a protector. Okay, sir. Protractor. It is used to measure angle. Okay. Sir, in this chapter, we have to also use a compass. Compass is also used. Yes, you will use compass to make circle. Okay, sir. Sir, but I make circle from this only. Excuse me, sir. Sir. So now we can start. Yes, beta. Bolo. What are you asking? Sir, I am saying that yesterday I have network issues. So please, sir, please tell me. We have to do exercise 17.1 in the book or notebook? In the book only. Sir, in the book. Yes. So now we can start exercise 7.2. Yes. Let us start exercise 7.2, 17.2. Sir, we have to make lines from pencil or pen. You have to draw the lines using a pencil, not with the help of a pen, only with a pencil. Okay, so everyone, do you all have a scale and a pencil? Yes, sir. We are starting with exercise 17.2. In this, we have to draw line segments. We have to draw line segments. अब देखिए आपका जो स्केल है उस पे आपने देखा होगा कि फॉर एग्जांपल दिस इज योर स्केल. आपने देखा होगा यहाँ पर पहले उसमें 0 लिखा होगा, 0. फिर छोटे 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 कट्स होंगे. हाँ, फिर उसके बाद 1 आया होगा, फिर से 2 आया होगा, थ्री, Sir, we 4, have to use these scales in angles. 5. Sir, this is scale only. In drawing a line, when we are drawing an angle, we use this is scale protector. Scale, simple scale. Yes, sir. This is scale we have to use. Yes. Start with simple scale. Sir, No. when we are making an angle, we have to use a protector, sir, this. So in question 1, we have to draw a line segment of 5.2 centimeters. ध्यान से देखिए everyone. So 5.2 centimeters आपको कैसे मेजर करना है? आपको एक लाइन ड्रॉ करना है. देखो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ स्केल. ये देखिए, ये आपने स्केल रखा अपना, कॉपी पर स्केल रखेंगे. एवरीवन प्लीज पे अटेंशन, ऑल ऑफ यू सी दिस. स्केल रखेंगे एंड स्केल रखने के बाद यू विल नाउ ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट. देखो कैसे ड्रॉ करना है.
So start from 0. So we have to 0 start from 0 से स्टार्ट करेंगे और आगे Sir, बढ़ेंगे. I know all about line sign. Sir, आगे I बढ़ेंगे. know. I have also learned, sir, with my mother. 0 से स्टार्ट करोगे बेटा, देखो ध्यान से. 0 से स्टार्ट करेंगे और 5.2 तक जाएंगे. 5.2 कहाँ पे होगा? 5 से 2 पॉइंट जो छोटे छोटे कट्स लगे हुए हैं, उससे 2 पॉइंट जो सेकंड वाला कट है वहां तक जाना है आपको. इज इट क्लियर और नॉट? सेंटीमीटर वाली साइड से ड्रॉ करेंगे, इंच वाली साइड से ड्रॉ नहीं करेंगे. सेंटीमीटर वाली साइड, जो छोटे वाले डिविजन्स होते हैं, दैट इज सेंटीमीटर. जहां पे ज्यादा गैप होता है, दैट इज इंच. इंच वाली साइड से ड्रॉ नहीं करना है, सेंटीमीटर वाली साइड से ड्रॉ करना है. सेंटीमीटर समझ गए? जहां पे जो गैप होता है वो छोटा छोटा होता है, दैट इज सेंटीमीटर इन योर स्केल. ओके. सो सेंटीमीटर वाली साइड में 5 से थोड़ा सा आगे बढ़ोगे, सेकंड वाला जो कट आएगा, छोटा सा सेकंड कट, वहां तक जाएंगे एंड योर लाइन सेगमेंट विल बी कंप्लीटेड. ओके, ये कंप्लीट कर दिया आपने लाइन सेगमेंट. इसके बाद अपना स्केल आप यहाँ से उठा लीजिए. ये स्केल पड़ा हुआ था, यहाँ से आपने अपना स्केल उठा लिया. ठीक है, हटा दें बेटा स्केल. समझ में आ गया? लाइन ड्रॉ हो गई, देखो. सो पॉइंट ए एंड बी सॉरी, ए एंड बी के बीच में, दिस इज द कंप्लीट लाइन सेगमेंट फॉर 5.2 सेंटीमीटर इज द डिस्टेंस. ऐसे करके लिख लेंगे. यू विल नेम द लाइन सेगमेंट एज ए बी एंड मार्क द डिस्टेंस एज 5.2 सेंटीमीटर. समझ में आ गया बेटा कैसे करना है? Yes, sir. इसके दोनों साइड में आपको एरोज नहीं बनाने हैं. दिस इज नॉट अ लाइन, दिस इज अ लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स होते हैं, एरो नहीं बनते हैं. एरो बनने का मतलब होता है कि आपने लाइन बना दी. लाइन एंड लाइन सेगमेंट में डिफरेंस समझ में आया था आपको? लाइन की Yes, डेफिनेट लेंथ sir. नहीं होती है, लाइन कितना भी प्रोड्यूस की जा सकती है, बट लाइन सेगमेंट की फिक्स्ड लेंथ होती है. Sir, yes, sir. Sir, अगर सर हम इसमें एरोस लगा देंगे तो ये लाइन लाइन सेगमेंट बन बन जाएगी. लाइन बन जाएगी. लाइन Sir, सेगमेंट नहीं please बन see जाएगी, लाइन बन my. जाएगी. दिस इज अ लाइन सेगमेंट. एरोज नहीं बनाएंगे, दैट मींस इट इज अ Sir, लाइन please. सेगमेंट. ओके, सो Okay, कंप्लीट इट. sir. Sir, please, sir, please see. I'm. ओके, Sir, वेरी 1 minute. गुड. Sir, 1 minute. Excuse me, sir. Please see. यस, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड. ठीक है, अब आप लोग क्या करेंगे? नाउ यू ऑल विल मेक ऑल द लाइन सेगमेंट्स व्हिच आर गिवन इन द क्वेश्चन, द एक्सरसाइज. सारे बनाइए, स्टार्ट करिए. यूज अ All the पेंसिल, use a pencil and start drawing. Okay, draw all the line segments which are given in the exercise. जल्दी से करो, बहुत इजी काम है.
Can any one of you send the photo of the exercise from the book? The photo of this exercise from the book. बुक में से एक फोटो लेकर के ग्रुप पे सेंड कर दीजिए एक्सरसाइज की. पेज नंबर 133 का फोटो क्लिक करो. एक बच्चा कोई भी सेंड कर दो ग्रुप पे.
Okay, all of you done? Done all the questions? Yes, sir. Wait for 1 minute. Sir, I have done all the lines. Sir, I have done all the lines. Sir, I have done also. हो गया बेटा. Yes, sir. सर Okay, मेरा so भी I हो will गया. show you a video about angles. Yes, ready, everyone? I'm Yes going to sir. show you a video about angles. This will give you information about what is angle, how can you measure angles, how you can draw angles, and what are different types of angles. Okay. So yes, everyone, ready? May I share the screen? Ready, all of you? Yes sir. Okay. See the video. Used in cricket and football too. The sound is coming. Sound is coming or not? Yes, sir. No. Lives. Yes, sir. Angles are part of our daily lives. But do you know angles are used in cricket and football too? Welcome to KID Company with Kabir, Isha and Dhruv. I am Azan and today we will learn Introduction to Angles, measuring an angle using a protractor, different types of angles, constructing an angle using a protractor. Let's go and learn how angles can be a part of our everyday sports. When playing football, your ultimate aim is to score a goal. Believe me, if you study your opponent properly and know your kicks, your angles, it is very easy to better your game and be a great footballer. Do you get it? Yes, sir. Now, let's gear up for the match. You all have 20 minutes. Then we all meet here again for our warm-up game, okay? Yes, sir. Great! Tough coach. Yeah, but he's a great teacher. Sometimes I don't understand what he says. He was saying something about angles. I wonder what that is. Ta-da! Of course. Why fear? When Dhruv is here. What is it? Angles. If I'm not wrong. Yes, our coach was telling us about kicks and something about angles. How are they related? Every sport works on mathematical principles, especially angles. Let me explain. When two rays meet at one common point, an angle is formed. We can see angles formed by different objects around us. The hands of a clock. The arms of the divider in your geometry box. The edges of a table. The two rays which form the angle are called the arms of the angle. The common point where the rays meet is called the vertex of the angle. Look at these rays, AB and AC. They form an angle between them. So, both ray AB and ray AC are the arms of the angle. Point A is the vertex of the angle. This is the symbol used for an angle.
Every angle is given a name. An angle can be named using 3 letters. The middle letter is always the vertex of the angle. We can name the given angle as angle BAC or angle CAB. The same angle can also be named by its vertex as angle A. The space between the arms of the angle is called the interior of the angle, and the space outside the angle is called the exterior of the angle. So in this clock, these are the arms of the angle, and the point where the arms meet is the vertex. Easy, isn't it? Now let's go back and learn about different types of angles. But the coach said that know your kicks, your angles. How many angles are there to know? There are numerous angles, but broadly we classify them according to their measure. An angle is not measured with respect to the length of its arms. Instead, it is measured in terms of the amount of turns taken between the two arms of an angle. The unit used to measure an angle is degree. This is the symbol used for degree. We use an instrument called the protractor to measure an angle. You can find it in your geometry box. The protractor has 2 sets of measurements written on it. These are called scales. There is an inner scale and an outer scale, both having 0 degree to 180 degree in opposite directions. The midpoint of the baseline is called the center point. Let us measure the given angle, angle ABC, given here. Step 1. Place the center point of the protractor over the vertex B of the angle and place the baseline exactly over the bottom line of the angle. Step 2. Look at the arm on the baseline. It points to 0 on the inner scale. Thus, we need to measure the angle on the inner scale. Step 3. Read the measurement on the scale, where the other arm of the angle and the scale meet. The scale and the arm meet at 90 degrees. Thus, the angle measures 90 degrees. An angle measuring 90 degrees is called a right angle. The capital letter L in the alphabet is one example of a right angle. The corners of your school blackboard also make a right angle. That's one type of angle. Let us learn about other types of angles. An angle whose measure is more than 0 degree but less than 90 degree is called an acute angle. Try to form a small V using your palms. It will form an acute angle. The hands of the clock at 2 o'clock, blades of a scissor are all examples of acute angles. An angle whose measure is more than 90 degree but less than 180 degrees is called an obtuse angle. The hands of a clock at 4 o'clock. The angle formed by the Japanese fan shown are examples of obtuse angles. An angle whose measure is 180 degree is called a straight angle. If 2 right angles are kept next to one another, they form a straight angle. A pencil or a pen, the edge of a ruler, or the book are examples of straight angles. An angle which measures 360 degree is called a complete angle. When the arms of an angle takes one full turn, it is a complete angle. So when he says know your angles, he means? He meant that if you lift the ball with your kick in a certain angle, it will drift into the goalpost in a certain way. Oh, so what angle? Acute or obtuse? That depends on your position in the field. Oh, On paper,
It is very easy to make these angles. Like if you want to draw an obtuse angle measuring 120 degrees, you first draw a ray. Let us draw a ray AB. Place the center point of the protractor on point A, such that the baseline of the protractor lies exactly on ray AB. Find the division of 120 degrees along the scale whose 0 degree mark lies on ray AB. Mark a point against the measure and name it C. Remove the protractor and draw a ray from the vertex A through point C using a ruler. Thus, we have angle CAB measuring 120 degrees. And if you know the basics on paper properly, then making great angles with great kicks on the field will not be a problem. I think it will be a problem. Huh? Because the coach is already here. He said don't be late. Did not realize the time only. Run, Bunty, run! I hope he doesn't yell. I just hope he lets us play. I am waiting to see what the coach does to these two. But before we go to see if Kabir and Bunty get to play or not, let's go through today's topic. So today we have learned Introduction to Angles, measuring an angle using a protractor, different types of angles, constructing an angle using a protractor. See you in the next episode of KID Company. Till then, keep learning, keep practicing by logging on to topperlearning.com. Bye bye. Okay, so tell me what all you learned about angles in the video. क्या समझ में आया आपको? Sir, how to measure that CAB of 120 degrees? How to measure angles, how to construct angles, and what? Sir, different types of angles. Different types of angles. What is an angle? ये समझ में आया आपको? किसी को समझ में आया what is an angle? हाँ बेटा. नहीं आया समझ में? हाँ जी. Yes, everyone. कुछ तो बोलिए. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आया समझ में what is an angle? So I am one more time telling you what is an angle. Okay. So I am taking I am going to make two rays here. ये देखो, ये एक रे बनाई मैंने. Okay. And from the same vertex of this ray, I will construct another ray. This is one of the end points. इसी point से अगर मैं एक और रे बना देता हूँ, तो देखिए सेम पॉइंट से मैंने एक और रे बना दी. अब ये जो इन दोनों रेज के बीच में जो गैप दिख रहा है आपको अभी कम है, दिख रहा है सेम वर्टेक्स से. ये मैं यहाँ पर इंक्रीज कर रहा हूँ गैप. देखो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है गैप. सो ये जो बीच में जो गैप दिख रहा है दोनों रेज के बीच में, ये जो बार बार कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है, this gap tells you, this gap is actually measured and it is also known as an angle. इस गैप को हम मेजर कर सकते हैं और वो जो मेजर करने का जो तरीका है, एक्चुअली द गैप बिटवीन दीज टू रेज इज नोन एज एन एंगल. मतलब दोनों रेज एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कितना इंक्लाइंड है. इंक्लाइंड का मतलब जैसे फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट रे मैंने बनाई थी वो रे एकदम स्ट्रेट है, मतलब सीधी किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही है. दूसरी रे किसी और डायरेक्शन में जा रही है ना.
तो फर्स्ट वाली के अकॉर्डिंग दूसरी वाली रे जो है वो टेढ़ी है, फर्स्ट वाली के अकॉर्डिंग फर्स्ट वाली रे कहेगी कि भाई मैं तो सीधी हूँ तुम टेढ़ी हो, कहेगी। सो वो कितनी टेढ़ी है फर्स्ट वाली के अकॉर्डिंग, सेकंड रे कितनी टेढ़ी जा रही है, दैट इज एक्चुअली द एंगल। तो ये जो गैप है दोनों के बीच का, दिस गैप इज एक्चुअली नोन एज द एंगल। समझ में आया व्हाट इज एन एंगल? यस सर। ठीक है, सो दिस इज नोन एज एन एंगल and the point from where both the rays, both the arms भी बुलाते हैं, rays भी बुलाते हैं, this point where from where both the arms are starting, this is known as vertex। और इनको क्या बुलाते हैं? These are arms, this is the first arm and this one is the second arm। okay, तो ये होती है arm। everything clear about angle? Now angles are of different types, angles are of different type। देखिए आपको पता है 90 डिग्री एंगल कौन सा होता है? जहां पर L बन जाता है, दैट इज द 90 डिग्री एंगल, दैट इज आल्सो नोन एज अ राइट एंगल। ओके, उसको राइट एंगल भी बुलाते हैं, 90 डिग्री एंगल भी बुलाते हैं। तो ये देखो ऑल ऑफ यू, सो दिस इज मैं ये यहाँ पे ये बनाया मैंने, देखिए ये एल शेप बन गई, एल शेप, कैन यू सी? दिस इज इन एन एल शेप, दिख रहा है आपको एल शेप में? ऑल ऑफ यू कैन यू सी द एल शेप हियर? तो दिस एंगल इज नोन एज, ये जो एंगल यहाँ पे बीच में बन रहा है दोनों रेज के बीच में, दिस एंगल इज नोन एज 90 डिग्री एंगल। इट इज आल्सो कॉल्ड अ राइट एंगल। क्या बुलाते हैं इसको? राइट एंगल बुलाते हैं। ठीक है, इट इज नोन एज अ राइट एंगल। अब राइट एंगल से जो छोटे एंगल्स होते हैं, ये एंगल राइट एंगल से छोटा हो गया, छोटा हो गया। तो जो एंगल्स राइट एंगल से छोटे हो जाते हैं, कोई भी एंगल जो राइट एंगल से छोटा हो गया, दिस इज अ स्मॉलर एंगल देन एज कंपेयर टू राइट एंगल। तो ऐसे एंगल जो राइट एंगल से छोटे हो जाते हैं, दीज एंगल्स आर नोन एज एक्यूट एंगल्स। अच्छा, फिर से राइट एंगल पे वापस आ जाते हैं, ये फिर से राइट एंगल बन गया। अब राइट एंगल से बड़ा चले जाओगे, ये बड़ा हो गया थोड़ा, तो दिस इज नोन एज ऑब्ट्यूस एंगल, जो 90 से बड़े हो गए। यानी कि 90 से छोटे एंगल्स को बुलाएंगे एक्यूट एंड 90 से बड़े एंगल्स को क्या बुलाएंगे? ऑब्ट्यूस। ओके, बट 90 से बड़ा अगर बिल्कुल इतना बड़ा हो जाए कि स्ट्रेट लाइन बन जाए, देखिए दोबारा से स्ट्रेट लाइन बन गई है, कैन यू सी दैट इट इज फॉर्मिंग अ स्ट्रेट लाइन? तो अगर 90 से बड़ा होने के बाद ये जो स्ट्रेट लाइन बन जाती है, दिस इज नोन एज स्ट्रेट एंगल। क्या बुलाएंगे इसको? व्हाट इज दिस एंगल कॉल्ड एज? Straight angle. It is of 180 degrees. What is the measure of this angle? The measure of this angle is 180 degrees. 180 degrees। ठीक है, तो 90 से बड़ा बट 180 से छोटा। मैं 180 से थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ये छोटा हो गया, बट ये 90 से बड़ा है। एम आई राइट? 90 डिग्री से बड़ा है ना? तो 180 और 90 के बीच में जब वो एंगल होता है, दैट इज नोन एज ऑब्ट्यूस एंगल। क्लियर? इज इट क्लियर? अब दोबारा से ये पूरा घुमा देंगे, पूरा घुमा दिया, वापस से इसी पॉइंट पर आ गया, देखो पूरा ओवरलैप हो गया। It is called complete angle. कंप्लीट एंगल, एक्सीलेंट, वेरी गुड, दिस इज नोन एज कंप्लीट एंगल। वापस से उसी पॉइंट पर पूरा घूम के ऐसे वापस आ गया था, सो दिस इज नोन एज कंप्लीट एंगल। अंडरस्टूड Yes, sir. everyone? Okay, so we will continue this tomorrow. Yes, sir. Thank you. Welcome, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Bye bye. Sir.